Everyone says learn, learn, learn. But can anyone tell me how? हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम जिंदगी भर कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग करते हैं। बचपन से उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, चलना, चीखना, चिल्लाना और ना जाने क्या क्या। Whether learning a new language, learning a new sport, a new instrument, new concept, new topic, new subject, when we grow up, a new job, getting into a new relationship, and so on. Learning is almost in everything, whatever we do. So learning takes place throughout our life. Even students, they know they have to learn. All educational institutes also give emphasis on learning. But ये कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी ये नहीं सिखाता हाउ टू लर्न. वी ऑल नो लर्निंग इज टर्निंग इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, बट द बिग क्वेश्चन इज हाउ. सो टुडेज टॉपिक इज लर्निंग हाउ टू लर्न. हम जब कुछ भी लर्न करते हैं, अपनी लर्निंग एबिलिटी यूज करते हैं, बट बिफोर यू यूज योर कैलिबर, योर कैपेबिलिटी, you should recognize what type of learner you are. What is your style? Accordingly, you should use a suitable learning method. क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है आपका learning style क्या है, आप क्या methods use कर सकते हैं, then you are going to make this learning very, very complicated. So do watch this complete video till the end so that you can all the learning practices and you can make your learning perfect. So firstly, let's check it out. Which method do you use to learn? Visual learners learn by seeing pictures. ये देखकर learn करते हैं. इनकी बेस्ट लर्निंग होती है बाय यूजिंग पिक्चर्स, इमेजेस, कलर्स, कंप्यूटर्स और एनी अदर विजुअल मीडिया. इफ यू आर अ विजुअल लर्नर एंड यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, तो आपके दिमाग में एक ही बात बार बार आएगी, शो मी. Auditory learners learn by listening and hearing. It means that they have to listen again and again. इनको बार बार सुनने से कोई भी चीजें लर्न हो जाती हैं. It means that they understand and remember a new concept better when they are explained out loud. Kinesthetic learners, they have a hands-on experience. यानी वो जब अपने हाथ से करते हैं तो ज़्यादा सीखते हैं. That means they learn faster when they are physically involved and actively participate in all learning activities. Read and write learners study best by reading over the notes and copying them. यानी ये पढ़कर और लिखकर easily learn करते हैं. They fit in school taught study method of reading textbooks and writing notes. So now you know which learning method is yours. अब आपको अपना learning style पता है. So let's get into learning strategies जिससे हो जाएगी आपकी learning perfect. अक्सर हम अपने learning style को ignore करते हैं. अनफॉर्चुनेटली लर्न करने के लिए क्रैमिंग करते हैं, रिपीट करते हैं, एंड समटाइम वी डू हाईलाइट, रीड करते हैं लर्न करने के लिए. दीज प्रैक्टिसेस आरंट सो गुड. सो लेट्स लर्न फ्यू लर्निंग प्रैक्टिसेस विच वी कैन इजीली ब्रिंग इट इन यूज फॉर बेटर लर्निंग. जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, यू नीड टू ट्राई टू रिकॉल इट. आप याद करने की कोशिश करो कि आपने क्या पढ़ा था. यू नीड टू पुल द मेमोरीज बैक विदाउट रेफरिंग द नोट्स एंड टेस्ट योरसेल्फ. सबसे इजी तरीका है रीराइट फ्रॉम योर मेमोरी.
Try to tell somebody what have you learned. आपको कोशिश करनी है याद करने की कि आपने क्या पढ़ा था. Force yourself. You may try this out. Cramming works in the short term, not in the long term. हो सकता है एग्जाम से पहले का क्रैमिंग सेशन आपको एग्जाम्स में ओके ग्रेड्स दिला दे, लेकिन उसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा. आपने देखा होगा हम जितनी जल्दी कुछ चीज याद करते हैं उतनी ही जल्दी उसको भूल भी जाते हैं. तो यू नीड टू स्पेस योर स्टडी सेशन, यानी आपको गैप्स के साथ स्टडी करनी है. आफ्टर गैप व्हेन यू रिविजिट द इंफॉर्मेशन यू विल सी इट रीस्टोर्स. दैट मीन्स योर फॉरगेटिंग रेट विल फर्दर रिड्यूस. अब आपको चीजें याद होने लगेंगी. दैट मीन्स that when you take a gap, you need to recall, you need to question yourself. So next time when you learn, try out spacing practice. Interleaving is a process where students mix multiple subjects or more topics, multiple topics. This really improves learning. Don't focus on getting one thing right first. Then moving on. कोशिश करो सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो. Let's say you are doing integration in mathematics. You can switch over to physics where you can learn the application of integration. This helps learner to reach higher levels of conceptual learning and application. Learning में कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें कुछ याद करना है, अगर उसके साथ कुछ कनेक्टेड स्टोरी है, कोई लोकेशन है, कोई विजुअल है, कोई साउंड है, कोई स्मेल है, तो हमें वो इजीली याद हो जाएगा. कनेक्ट व्हाट यू लर्न विद समथिंग व्हाट यू नो. Learning will be really faster. If you adopt these learning tactics, strategies, practices, I'm telling you, you will be able to tackle all the tough subjects and remember them easily for longer time. And now it's time to ponder. Friends, if you want to learn properly, know your learning style. Use the learning strategies to have good memory and of course good grades. Now you may take my advice. At this age, I'm still learning. Time spent in learning is never a waste. Hence, keep learning. Hope you loved my advice. For more of such advices, stay connected. Don't forget to like, subscribe and comment. Stay tuned, stay safe. Bye-bye. See you. Namaskar. Jai Hind.